Yes, Mariam, right? Start writing the question number 65. Okay, sir. Note down the question number 65 in notebook. Yes, sir. Yes, sir. I wrote the question. Write down the answer also. Okay, sir. Two O's in B. A when gives carbon dioxide, whereas B gives carbon. What step you convert them into metals? So when with the one which gives carbon dioxide is the carbonate one, Yes, sir. And the sulfide is the sulfide ore. and the one which gives sulfur dioxide on heating, it is a sulfide ore. Yes, So sir. sulfide ore generally converted into metal by heating with with if it is mid reactive metal with heating with carbon, or if it is low reactive metal, then we're going to Calcination. actually we have not studied so this topic reductions just started. I did not read the questions. Just give you the question randomly. Yeah, do question number 55. Yes, sir. Yes, Abdul Kavi bhai, you join late.
Sir, I got What's the answer? ZnS plus O2 gives Zn plus SO2. This is for ZNO plus SO. oh, And it is zinc it is carbonate. carbonate. ZnO plus C gives ZnO plus CO2. And then we further do this reduction with the help of carbon. Okay, Yes, sir. let's move further. Ms. Abdul Kavi and Mariam, please turn on your camera. Yes, sir. Abdul Kavi, are you there? Turn on your camera. Now the next step is Mariam that these are the metals that belongs to the mid-reactive metal. These are the mid-reactive okay, these are the all metals that we have written here. And I have added some other elements also here like carbon in between. And in the reactivity series, we don't have chromium and manganese, but I have added chromium and manganese here. And then zinc and then this one. So what we are going to do here is that now suppose if an element is present, if it is oxide form or carbonate form, okay, that it is carbonate form, calcium carbonate. So first it will get converted into calcium oxide, like it is zinc carbonate, zinc sulfide, so it will get converted into ZNO. Now, how can we extract this, remove this oxygen? We need only calcium, we need only zinc, not zinc oxide. So for this, what we did thus, we does electrolytic, sorry, we does reduction. Reduction means removal of oxygen. So the next topic for this one is reduction. Reduction of ores. Okay, so note it Okay, down. sir. Note it down. If we are talking here that potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, chromium, and manganese. Okay, note this table fast. Note this all in one go. Means after lead, Sir, you have hydrogen, then copper, then mercury, then silver, then gold, then platinum. Yes. sir, I can see your exemplar screen. Oh, I'm not share the screen. So I'm saying here that like in the carbonate form, it get converted into calcination. By Mm. calcination, it get converted into calcium oxide. Like roasting, it get converted into ZNO plus SO2. Yes, sir. How can we remove? Now, next step is the removal of oxygen. That is called reduction. Next step is reduction of force. Topic down reduction of force. Reduction of force. Yes, sir. I don't. Now note this table fast. After lead, we have hydrogen, then copper, then mercury, then silver, then gold, then platinum. Note it fast.
Yes, sir, I wrote. Okay. So for this net gold and platinum, this is gold and platinum. Gold and platinum exist in the native state. We don't need to. They are don't found in the carbonate form or the oxide form or sulfide form. They are just we need to do the purification only. Talking about this copper, mercury, and silver. Okay. When we do roasting, when we do roasting, so simple roasting when we do this, like for example, we have mercury sulfide, HGS, like we have HGO. Okay, Hg plus O2 gives you HGO. So जब हम लोग इनको सिंपल रोस्ट करते हैं, when we are doing roasting, Yes, sir. then it will get converted into Hg plus O2. Okay, means Hg plus O2 will gives you HGO plus SO2. यानी Hg जो है वो उसमें से सल्फर रोस्टिंग के दौरान ये HGO में आ जाएगा, HG plus SO2. When we keep on heating this one, it will get converted into Hg plus O2. Oxygen भी बाहर हो जाएगी. Similarly, silver sulfide, when you heat it in the presence of oxygen, it will give you Ag2O plus sulfur dioxide. When you keep on heating, it will convert it. Okay, Yes, understood? Yes sir. or no? Note it Yes, down sir. fast. Note it down fast. Sir, done. सबने लिखा है? डन. उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके, व्हेन वी आर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन, सॉरी, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आफ्टर द कॉपर, अब ध्यान से, ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब स्टॉप राइटिंग है. कॉपर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड. इसको जो हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू Cu2O प्लस SO2, जो नॉर्मल पिछले दो स्टेप्स में भी हो रहा है. सल्फर सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन से कन्वर्ट किया, तो ये आएगा. अब अकेला अगर हम लोग Cu2O को हीट करते हैं, तो ये Cu2O ही रहेगा. वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट, आइदर कार्बन और समथिंग. अकेले में नहीं होगा, जैसे पिछले इसमें हो रहा था. यहाँ पर देखा हमने कि HgO को हीट किया तो Hg प्लस O2 हो गया, AgO2O को हीट किया तो Ag प्लस O2. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है. इसके साथ हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. अब क्योंकि हम लोग ये इकोनॉमिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिकल मेथड्स में हम लोग को अगर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बच जाए, किसी तरह से ना डाले हम लोग, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर वो हम लोग उसी मेथड से उसको रिड्यूस करेंगे. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होता है, ऐसे तो है नहीं कि इंस्टेंटली पूरा का पूरा इसमें एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे पॉपकॉर्न होती है, पॉपकॉर्न कुछ गर्म होती है, थोड़ी थोड़ी, ऐसे थोड़ी ना इंस्टेंटली एक सेकंड में. अभी तो सीख थी, अगले सेकंड में सारे के सारे दे गेट कन्वर्टेड इनटू, मतलब फ्लफी. ऐसे थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे करके होता है. तो जैसे ये है हमारे पास, इसको हीट किया तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये बाकी के उस पोर्शन से जो रिएक्ट नहीं किया होगा उसकी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाता है. मतलब होता क्या है कि एक्चुअल में ये Cu2O फर्दर इट रिएक्ट विद Cu2S, क्रश्ड ओर. तो ये पाउडर फॉर्म में ना, क्रश्ड ओर, टू गिव Cu प्लस SO2. इससे पता क्या चला कि क्रश्ड ओर यहाँ पर एक रिड्यूस एजेंट की तरह बिहेव कर रही है. ये जो खुद क्रश्ड ओर है ना, ये बिहेव करती है, क्रश्ड ओर बिहेव
एज रेड्यूसिंग एजेंट। पता कैसे चला कि क्रश्ड ओर बिहेव कर रही है एज रेड्यूसिंग एजेंट? पता ऐसे चला कि ये जो हमारे पास कॉपर है, ठीक है, पिछले दो केसेस में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही थी, दूसरे स्टेप में यहाँ ऑक्सीजन गैस मिली है दूसरे स्टेप में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती, दोनों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्रश्ड ओर इटसेल्फ बिहेव करती है एज रेड्यूसिंग एजेंट। समझ आया? समझ आया? यस और नो? सो note it down fast. Crushed ore behave like as a reducing agent. We are done. Okay. सो यही तरीका है इसमें क्रश और सेल बिहेव करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, अगर मैं शेयर करूँ तो Cu2S वाला, कि क्या होता है जब हम लोग मिक्सचर ऑफ Cu2S, यही पार्ट है दूसरा वाला, मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड Cu2O इज हीट कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? इट विल गिव्स यू कॉपर सल्फाइड प्लस, सॉरी, वो दोनों को हीट किया जाए तो क्या बनेगा? इट विल गिव्स यू Cu प्लस SO। समझ आया? Yes, sir. गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब जो बाकी के मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन हम लोग करते हैं बाय कार्बन, जो मिड रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना। कार्बन यहाँ पे मैंने बनाया था उसमें, तो मैग्नीशियम क्रोमियम के नीचे कार्बन लिखा था, तो मतलब ये सारे मेटल का जो रिडक्शन होता है वो कार्बन से होता है। वो तो एल्यूमिनियम से भी सकता है, लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिकल मेथड पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिकल मेथड्स, एंड इन द इकोनॉमिकल मेथड्स we should use that element that can gives us the best product in cheaper way. So why, if we can use carbon and the reduction is possible with carbon, then why we should use some other elements which are costlier than carbon? So that's why the zinc, iron, and tin and lead. If zinc is present, like suppose zinc is present in the form of ZnS, we roast it by heating, it will get converted into ZnO, and then sulfur dioxide में convert हो जाएगा। अब ये जो ZnO, इसमें अगर आपको रिडक्शन कराना तो यू कैन डू इट विद कार्बन, Zn plus CO2 लेवल। जितने भी मिड रिएक्टिव मेटल्स है उनका रिडक्शन किससे होता है? दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय carbon. Okay, so note it down. Smelting and the reduction with carbon is called smelting. So note it down. Mid reactive metals can be reduced by heating it with heating. They require a suitable reducing agent. Cannot be reduced by simple heating. मतलब अगर simple heat किया तो नहीं होगा. They require suitable reagent for reduction. उनको suitable reagent की जरूरत होती है. And for using carbon smelting. Note it down fast.
Sir, what is the word after suitable? They require suitable. Yes, Mariam, done. Uh, ये लिख लिया था सबने यहाँ पर कि क्रश वुड बिहेव करती है तो रिड्यूसिंग एजेंट और ये स्मेल्टिंग वगैरह लिख लिया। yes. लिखिए यहाँ पर कि आयरन को अगर कार्बन से रिडक्शन कराया तो अलवीना भाई यू ज्वाइन लेट। आज मैं तुम्हें ठीक करता हूँ भाई, बहुत हो गया। हाँ भाई यू ज्वाइन लेट बेटा। Sir, my Zoom, it wasn't, working. So I had to reinstall and then refresh it again. सच्ची सच्ची बता दो, सच्ची सच्ची And सच्ची। also I was having my exam. बेटे एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है या क्लास इम्पोर्टेंट? तुम ऐसा टाइम क्यों देती हो जो कंसाइड करता है तुम्हारे टेस्ट से? चलिए अगर मैं बात करता हूँ दैट इज नेक्स्ट इज ये डन हो गया। तो मिड रिएक्टिव मेटल्स आर, बीच में समझोगे तो समझ ही नहीं आएगा। मिड रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं that are reduced by with the help of carbon, understood? That are reduced by carbon, got it? Yes or no? Yes, sir. उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मैंने कार्बन से ऊपर लिखा है मैग्नीज एंड क्रोमियम को, और एल्यूमिनियम उनके ऊपर है। तो मैग्नीज ऑक्साइड है या क्रोमियम ऑक्साइड है, उसमें से मेटल कार्बन से नहीं निकल सकता क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो फिर हमें मजबूरन एल्यूमिनियम से कराना पड़ेगा भाई, अब कार्बन से नहीं हो रहा था काम तो फिर एल्यूमिनियम चाहिए उसके ऊपर वाला मेटल। तो मैग्नीज और एल्यूमिनियम के रिडक्शन को, यानी मैग्नीज ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, ये इस रिडक्शन विद एल्यूमिनियम इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शंस, व्हाट सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनोथर्मी। जैसे कार्बन से रिडक्शन को, the reduction with carbon we called smelting, similarly the reduction with aluminum we called it
We called it aluminothermy. Okay, and this reaction is so exothermic that the reduction with aluminium is so exothermic that the heat liberated out during this reaction result to metal to obtain in the liquid state. Like manganese will be obtained in the liquid state, chromium will be obtained in the liquid state. Now अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चे ध्यान देंगे। ये हमारे पास आयरन मिड रिएक्टिव मेटल है, आयरन इज अ मिड रिएक्टिव मेटल्स एंड इट कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ कार्बन। जिंक ऑक्साइड हो गया तुम्हारा, आयरन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, दे कैन ऑल बी रिड्यूस, दे आर द मिड रिएक्टिव मेटल्स एंड दे कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ कार्बन। लेकिन जब हम लोग कार्बन से रिडक्शन कराते हैं, द मेटल इज नॉट ऑब्टेन इन द लिक्विड स्टेट, बल्कि इनफैक्ट हमें खुद को मेटल को मेल्ट करना पड़ता है, उसमें कार्बन के पाउडर्स को डालना पड़ता है और फिर उसके बाद उसका रिडक्शन होता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ब्लास्ट फर्नेसेस में हमें हाई टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, इसमें मेटल जो है, आयरन वगैरह, आयरन ऑक्साइड जो है वो मेल्टेड फॉर्म में हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग कार्बन को डालते हैं, तब ये जाकर के रिड्यूस होता है, मेटल आता है। लेकिन अगर व्हाट इफ कि अगर हमें आयरन ही मेल्टेड फॉर्म में चाहिए तो करना ना पड़े, खुद ही मिलेगा, तो वी रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। तब हम लोग मेटल ऑक्साइड यानी जैसे आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम से कराएंगे, एल्यूमिनियम पाउडर, दोनों को पाउडर फॉर्म में ले लिया और एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराएंगे, तो ये देगा आपको Fe इन द लिक्विड स्टेट प्लस Al2O3। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इसमें जो आयरन ऑप्टेन होगा वो बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में होता है। इन दोनों का पाउडर ले लिया और जलता हुआ एक मैग्नीशियम रिबन डाला, तो जो हीट लिबरेटेड आउट होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आयरन मॉल्टेड फॉर्म में। और इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन? The benefit of this one is that this is used for joining railway tracks and broken machineries. Like suppose we have these two, okay? और इसमें हमने लेट सपोज करो कि यहाँ पे भी तो ये हमने ऐसा कोई वेसल रखा, लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई एक वेसल रखा, कंटेनर, इसके अंदर पाउडर है किसका, तो हम लोग देखेंगे भी इसको, इसके अंदर पाउडर है Al2O3, सॉरी Al प्लस Fe2O3 दोनों का पाउडर है, और हमने इसमें जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन डाला, तो इसमें जो आयरन ऑप्टेन होगा वो इतना लिक्विड स्टेट में होगा कि वो रेलवे ट्रैक्स और ब्रोकन मशीनरीज को जोड़ने के काम में आएगा। मतलब वी कैन फिल द गैप, क्योंकि ये चीज इतनी छोटी, ये जो रॉड से वेल्डिंग होता है दैट इज व्हेन दे आर ओवर वन ईच अदर, और फिर उसके बाद हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप है, यहाँ पर गैप है, तो फिर कैसे वेल्डिंग होगी, वी कैन नॉट वेल्ड। सो फॉर फिलिंग द गैप्स वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन। मरियम लुक एट दिस, वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, बहुत ज्यादा आयरन चाहिए, 10-15 किलो आयरन चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि वी कैन शिफ्ट, वी कैन हीट द आयरन इन सम ब्लास्ट फर्नेसेस और फिर देन वी ब्रिंग इट टू join the railway track, और लाते और the way we are using, like for example if it is 10 meter or 15 meter away, then even though iron can melt in that one, the welding cannot be good. So what we does is we do the thermite reaction on the spot and we obtain the iron, and that iron get melted and comes in the form. And so here I can show you that how does thermite reactions takes place. You can check it. Okay. So this is the can. This is the can that is carrying the powder of aluminum oxide. Sorry, aluminum and iron oxide. Even though the heat liberated out is so large that the tin, that bottom of this tin get melted. But you can check. He added the magnesium, burning magnesium ribbon to it, and then let the reaction start. You can check. The reaction is so exothermic that you can check the iron is coming like a liquid is coming. You can check. This is the reaction. How exothermic this reaction is, that the iron is obtaining is in the liquid state, and that is used to fill the joining the gap between, or filling the gap between the two rails
And this is done by welding. This is the thermite reactions. Now he has removed this one. Now this will be removed, this gap, and finally will then they will remove this all like this. And then it is filled in the gap between this they have joined. This is used for joining the railway track and broken machineries, thermite reactions. Understood? Yes or no? Yes, sir. So let's go further. Note each and everything here. Done? Yes. Okay. So here, now the reduction with aluminum is exothermic process. The heat liberated out during the reaction is so large that the metal obtained is in the liquid state. Note it down fast. You have noted up to here? Yes. Oh, okay, so let's have our questions. Sir, 1 minute. I want to write the last sentence. Okay, and thermite reaction is a specially name given to this reaction only. Note it down, thermite reaction, it is used for joining the railway tracks and broken machineries.
Done, everyone noted? Yes. चलिए तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Note this question number 46. Sir, which question? Question number 46. Note it down fast. So metal A जो कि थर्माइट रिएक्शन में यूज होता है, तो कौन सा मेटल यूज होता है थर्माइट रिएक्शन? Aluminium. Aluminium. आयरन इज आयरन नहीं यूज, आयरन इज आयरन ऑक्साइड यूज होती है ना कि आयरन। तो आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है ना कि एलिमेंट। ओके, सो एल्यूमिनियम इज दैट एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन when heated it gives compound, it gives oxide. So एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे, एल्यूमिनियम को हीट करोगे, यहाँ थर्माइट रिएक्शन की बात नहीं चली, बस इतना ही पूछा गया है कि एलिमेंट ए को थर्माइट रिएक्शन में यूज किया जाता है। तो अगर आपको पता हो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, आपको बदल जाएगा एल्यूमिनियम। So when you heat aluminium it gives you Al2O3, an oxide B oxide देगा, and which is amphoteric in nature. Identify A and B. A is aluminium and B is this one. और B की रिएक्शंस देखिए, B मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन
देखिए HCl के साथ और NaOH के साथ, बताइए क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा इनका NaOH। AlCl plus H2O with HCl. AlCl3. Aluminium has valency 1, sorry 3, and chloride has valency 1. Cross multiply, you will get AlCl3 plus H2O. H2. Next, when you have Al2O3 and you are reacting with this one, you will get NaAlO2 plus Plus hydrogen uh, plus what? Plus water. water. Yeah, it will give you salt and water. If it is only Na, then it is hydrogen gas. If it is a NaOH, sorry, if it is only aluminium, then it will give you sodium aluminate, NaLO2. If it is not aluminium, it is aluminium oxide, then it will gives you NaLO2 plus water. The hydrogen gas will convert into water. Okay, understood? Yes or no? Yes. Noted. Yes. Yes. Let's move further. Talking about the electrolytic reduction. Now the metals that are above the hydrogen, sorry, above the aluminium, above chromium and manganese, or we can say that including the aluminium, like sodium, the highly reactive metals we are talking about. The highly reactive metals we are talking about. Okay. So like we are talking about Na, when react Na, sodium, potassium, like Na exit in the form of NaCl. Okay. Be it calcium oxide. Okay, by reducing calcium. Okay, and then magnesium oxide, or we have aluminium Al2O3. So we have converted them into their oxide form by different method like calcination and roasting. Now they are reduced into their metallic form by electrolytic reduction. Note my point that we are going to study two types of things in electrolytic cell here. One is electrolytic refining, another one is electrolytic reduction. Reduction means removal of oxygen or electronegative element. And refining means purifying the metals. Only the metal will be there. There will be no oxide form. Only the pure metal we are refining it. So electrolytic reduction is done for highly reactive metals. Electrolytic reduction is done for highly reactive metals. And electrolytic refining is done for low reactive metals or mid reactive metals. Okay. So we are studying the electrolytic reduction. Like for example, we take Na, we want Na from NaCl. So we'll take Na in the liquid state, in the molten state. When we pass electricity, don't write, just listen to it, just concentrate here. Zainab, turn on your camera. So when we pass electricity to it, you will get Na solid at cathode and see chlorine gas at anode. So let me tell you here one thing that, for example, let you take the cells, okay, and you pass electricity to it. Is positively charged, negatively charged. So when we have molten, we don't take aqueous. If you take aqueous, you remember that if we take aqueous, then it will do the chloralkali process. It will give you NaOH plus Cl2 plus H2. You remember? So we don't take this one. We take only the molten NaCl. Why molten? Because we need the ionic form Na positive and Cl minus. Na positive and Cl minus ion. Na positive and Cl minus ion. So this line. So what happened at cathode? At cathode, what is going to happen? Mariam, don't write it, just understand. That cathode is negatively charged. So first we will write at anode. At anode, anode is positively charged. The two Cl minus atoms. Cl minus means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 287 is electronic configuration of chlorine. When it get an extra electron, 288, so it will become Cl minus. Another Cl minus also goes, and they will lose 1 of electron each. When they will lose 1 electron each,
सो दे विल बिकम क्लोरीन, फ्रॉम क्लोराइड आयन से वो क्लोरीन एटम बन जाएंगे, दे विल बिकम क्लोरीन एटम फ्रॉम क्लोराइड आयन एंड दे कंबाइन टुगेदर with a covalent bond and will form Cl2, एक एक आयन। तो यहाँ पर क्लोरीन बनेगा और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2Cl आ जाएगा। तो फिर एट एनोड पर क्या होगा, सॉरी एट कैथोड पर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब पता है कि सोडियम जो होता है वो इसमें आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म मतलब सोडियम सॉलिड होता है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। मरियम नींद आ रही है? बहुत एचडी कैमरा है तो एकदम दिख रहा है सब। तो Na पॉजिटिव का मतलब होता है 28, ओनली 28, इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अभी अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये वापस से सोडियम एटम बन जाएगा, जो कि सोडियम सॉलिड होता है जिसमें 281 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम कैन ओनली हैव वन इलेक्ट्रॉन। When the two Na positive ion, in order to balance, this two electron will comes here, will be received by two Na positive and will form two Na solid. In overall reaction हमारे पास ये आ जाएगी overall. So electrolytic reduction is done for the highly reactive metals like aluminium, like gold, sorry, like aluminium, calcium, magnesium, okay, and sodium, potassium. इनके लिए करते हैं, इसमें हम लोग मोल्टन NaCl को लेते हैं, फिर इसको रिड्यूस करते हैं। तो फटाफट से लिखना शुरू करें बस। चलो लिखो पहले, ये बनाओ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जस्ट अ मिनट, यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से, इस जगह से, ये मत लिखना। सर डन। सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. उसके बाद आगे का ये वाला पोर्शन लिखो।
और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है। The whole page. पूरा हो